start. So let me share the screen. ओके कल हम शायद वो हमने नहीं किया था. कल हमने बेसिकली किया था वो एक तो वो algebra of sequence that the sequences of convergent, then there are some product quotient जो sequences का वो सभी converge करते हैं. तो मैंने बोला था ये तुम बुक से देख लेना. So it's an exercise in how do you evaluate the limits of मतलब triangle inequality basically यूज होती है और एससी मलिक ने ठीक से किया है वो तुम कर लो. ओके दूसरा मैंने ये किया था शायद कि अगर आपके पास कोई नॉन नेगेटिव सीक्वेंस है यानी अगर सारी टर्म्स नॉन नेगेटिव है राइट और ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है फॉर ऑल एन अगर ऐसा है तो देन इसका जो लिमिट है लिमिट एन अप्रोचेस इंफिनिटी एन वो भी नॉन नेगेटिव होगा राइट राइट. तो एक छोटा सा और एक थ्योरम इसी से हमें मिलेगा कि if पता नहीं हमने किया था कि शुरू ही किया था if n runs from 1 to infinity and pn are two convergent sequences such that what en is less than or equal to pn for all n okay and उसी convergent है limit n approaches infinity an मान लो कोई number है a and limit as n goes to infinity of this in the sequence this is b then a would also be less than or equal to b. जो proof है इसका वो बड़ा हम मतलब दो तरीके हैं. एक हम पुराना वो यूज कर सकते हैं वो क्या कि since an is less than or equal to pn for all n belonging to the set of natural numbers it implies that Cn को अगर मैं लूँ Pn minus An this would be greater than or equal to 0 for all n belonging to the set of natural numbers. So this is greater than इसको यहाँ flip किया और इसका नाम दिया C है. Now with previous result now then limit n approaches infinity Cn जो होगा वो greater than or equal to 0 होगा. By previous result by previous theorem अगर कोई सीरीज नॉन नेगेटिव है तो उसका लिमिट भी कोई सीक्वेंस अगर नॉन नेगेटिव है सारी टर्म्स उसकी नॉन नेगेटिव है तो उसका जो लिमिट होगा वो भी नॉन नेगेटिव होगा which implies that limit n approaches infinity pn minus an is greater than or equal to 0. Which implies that अब चूंकि हमें पता है कि जो मैंने कल बताया था algebra of limits के बारे में ये करने के लिए उसमें क्या है कि it means that limit n approaches infinity pn minus limit n approaches infinity an is greater than or equal to 0 which implies that ये तो b है और ये तो a है so it means that b minus a is greater than or equal to 0 which means that a is less than or equal to b जो कि हमें प्रूव करना था a is less than or equal to b तो स्ट्रेट फॉरवर्ड. इसी तरह से एक और छोटा रिसर्च हमें करना है हाँ ये स्क्वीज प्रिंसिपल या सैंडविच प्रिंसिपल वो ये हम कर सकते हैं अपने थ्योरम. Now if an bn of course मैं कभी कभी अब नहीं लिखूंगा ये n runs from 1 to infinity it is assumed and this c sub n runs from 1 to infinity are three sequences of real numbers such that what an is less than or equal to bn is less than or equal to cn for all n belonging to a set of natural numbers ये अगर inequality hold करती है and
ए एन और बी एन कन्वर्ज करती है और सेम लिमिट को कन्वर्ज करती है एंड लिमिट n approaches infinity a n is equal to limit n approaches infinity c n is equal to some l। तो अगर ये जो दाएं और बाएं इसके सीक्वेंस है उनका सेम लिमिट है कन्वर्ज करती है तो ये जो बीच वाली सीक्वेंस है तो देन लिमिट n approaches infinity bn भी l ही हो तो इसका लिमिट भी वही होगा जो इसका अगर इन दोनों का सेम। प्रूफ इसका बड़ा सिंपल है। नाउ मैंने क्या लिया है cn, चलो लेते हैं। नाउ सिंस लिमिट n approaches infinity a n n इसका लिमिट l है so therefore for any epsilon positive there exists some n1 मैं लेता हूँ नेचुरल नंबर n0 नाम रखते हैं अभी n1 रखा क्योंकि हमारे पास दो होंगी such that क्या modulus of an minus l is less than epsilon for all n greater than or equal to n1. Similarly there exists some n2 belonging to set of natural numbers such that ये जो दूसरी सीक्वेंस है that cn minus l is less than epsilon for all n bigger than or equal to n2. Now which implies that okay if n naught को अगर मैं ले लूं maximum of this n1 n2 then for all n bigger than or equal to n naught I have the n minus l is less than epsilon and a cn minus l is also less than epsilon है ना क्योंकि अगर n bigger than or equal to n naught है तो वो n1 से भी बड़ा है और n2 से भी बड़ा है तो ये दोनों इनइक्वालिटीज होल्ड करनी चाहिए। ओके सो दिस मीन्स जैसा कि हमने इससे पहले कर चुके हैं दिस मीन्स दैट this implies that L minus epsilon is less than an is less than L plus epsilon for all n greater than or equal to n naught and Cn के लिए भी true है Cn is bigger than L minus epsilon but less than L plus epsilon for all n greater than or equal to n naught, right? उसका मतलब क्या हुआ उसका मतलब ये हुआ देखो मेरे पास ये सिचुएशन है but an is less than or equal to bn is less than or equal to cn for all n including these n's which are bigger than or equal to n naught. It will imply that L minus epsilon is less than Cn, an is less than or equal to Bn, which is less than or equal to Cn, which is less than L plus epsilon for all n greater than or equal to n naught. क्योंकि तभी है क्योंकि हमें ये फिट करना है इसके बीच में क्योंकि हर एक ये इससे बड़ा है ना और Cn जो है वो L plus epsilon से लेस है अगर ये इससे छोटा है तो ये इससे छोटा होगा इसी तरह से an जो है वो L minus epsilon से बड़ा है लेकिन bn उससे भी बड़ा है तो वो भी L minus epsilon से बड़ा है so it implies that bn is less than L plus epsilon bigger than L minus epsilon for all n bigger than or equal to epsilon n naught. So therefore for any epsilon positive there exists this n naught belonging to a set of natural numbers such that Bn minus L is less than epsilon for all n bigger than or equal to n naught, which would imply that limit n approaches infinity Bn, this is precisely the definition. So this is what we have to prove. Okay. इसको हम थोड़ा सा यूज भी कर सकते हैं तो ऐसे राइट इट डाउन यहाँ पे
सपोज मेरे पास एक सीक्वेंस है बी एन, मैं लिखूं कि नहीं, चलो लिखते हैं। इट इज 1/n+1 का स्क्वायर प्लस 1/n+2 का स्क्वायर, राइट, ठीक है, प्लस so on and so forth प्लस 1/2n का स्क्वायर। अब जब भी तुम किसी कभी लेट, चलो एक्सरसाइज इसको लिखता हूँ। लेट बी एन शो दैट जो बी एन है इट कन्वर्जेस टू 0 एज n approaches infinity. ओके, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब भी तुम्हें कोई ऐसी सीक्वेंस जब भी डिफाइन हो तो पहले उसकी कुछ टर्म्स लिखा करो। यानी b1 बराबर होगा n की जगह 1 देना है, सो इट वुड बी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस so on and so forth प्लस यहाँ क्या आएगा, n अगर 1 है, n को 1 दिया सो 2n आ जाएगा। मैंने क्या लिखा, नहीं मैंने गलत लिखा, n को 1 दिया so 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, नो गलत, ये सही तरीका नहीं है सोचने का क्योंकि ये सम है ना, तो सही तरीका क्या होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ लिखना चाहिए। सही तरीका ये है, इट इज 1/n+1 स्क्वायर, इसीलिए ये लिखना जरूरी है। b2 होगा 1/n+1 का स्क्वायर। अभी तुम्हें लगा होगा मुझसे भी गलती हो गई, हाँ वो सही है, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ कि इसीलिए ये जरूरी है कि पहले तुम अपने दिमाग में लाओ कि ये सीक्वेंस कैसी है, इसको एक एक टर्म ऐड होती जा रही है ना, तो इसी तरह से फिर बी एन होगा, उसमें एन टर्म्स आए, b2 में आएगी सम में 2 टर्म्स, b1 में एक ही टर्म, क्योंकि सम ऑफ टर्म्स, राइट, तो इसी तरह से 3 के 3 टर्म्स आएंगे। Okay, anyways, so this is our sequence. Now I want to use this squeeze principle to show that this converges to 0. Now what I know that is this, अब n+1 जो है का square is surely less than 2n square, because n+1 is less than 2n, तो उसका square भी इससे less होगा, right? Right. इसी तरह से 1+n+2 का जो स्क्वायर है वो भी होगा लेस देन 2n स्क्वायर, so on and so forth, तो इसका मतलब वो 1/2n का स्क्वायर जो है वो होगा लेस देन इक्वल टू 1/n+1 स्क्वायर, राइट, it will also be less than equal to 1/n+1 2 square, so on and so forth, or in general I can say 1/2n का whole square plus 1/2n का whole square is less than, plus so on and so forth, n times अगर मैं ये लूं, this should be less than or equal to, actually strictly less, but that doesn't matter. Okay, so this will be less than equal to 1/n+1 square plus so on and so forth plus 1/2n square. Okay, so which is my bn? तो squeeze तो हो गया, यानी that is n divided by 4, मतलब 2n स्क्वायर, क्योंकि n टर्म्स आ गई तो मैं ये सेम टर्म्स हैं तो इनको मैं ऐड करूंगा तो वो n टाइम्स हो जाएंगी, इज लेस देन और इक्वल टू बी एन, विच वुड बी लेस देन इक्वल टू, अगर मैं इसका उल्टा सोचूं राइट हैंड साइड पे, सो 1/n, देखो 1/n+1 का स्क्वायर जो है दैट्स बिगर देन n स्क्वायर, राइट, n+2 square जो है that's also bigger than n square. So in general I can say that 1/n+1 का square जो है वो less than 1/n square है, 1/n+2 का square जो है वो भी less than 1/n square है। कहने का मतलब ये जो मेरा right hand side है this would be equal to less than 1/n square plus so on and so forth plus 1/n square, जो n times है, which is equal to n times n square. So अब हमें क्या मिला इससे, I got that n times divided by 2n square is less than equal to bn is less than equal to n times, I think, n square, right, which is equal to 1/n.
और this is nothing but 1/4n. So मेरा जो sequence है bn, it is less than equal to 1/4n is less than equal to 1/n. Now let an be equal to 1/4n and cn be equal to 1/n. तो हमें पता है कि limit n approaches infinity, an is equal to 0, which is the same thing as limit n approaches infinity cn. क्योंकि इसको n अगर जितना बड़ा होता जाएगा 0 होता है, any number which is less than 1, है ना, उसका जो it's obvious है, 1/n goes to 0 as n approaches infinity. So अगर ये जो ये limits है, तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था then an is less than equal to bn is less than equal to cn for all n belonging to the. So और ये so therefore by previous theorem या जिसको हम कहते हैं by sandwich rule, अगर ये जो extreme sequences है ये converge करती है किसी limit को, same limit को, तो ये limit भी, तो by sandwich theorem या principle I should have limit bn as n approaches infinity also equal to 0. Just a simple illustration of this this theorem. तो इनको हम ये जो हमने techniques use की for non-negative sequences, or how do these limits, practice में हम कैसे इसको without knowing about the limit, okay, without knowing every limit जो है क्या बोलते हैं उनकी प्रॉपर्टीज या उनके कन्वर्जेंस के बारे में जो हम डिड्यूस कर सकते हैं इनडायरेक्टली यूजिंग दीज, जो हमने 2-3 रिजल्ट्स पिछले वाले किए. इसके बाद हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ सीक्वेंसेस की तरफ, दैट इज मोनोटोन सीक्वेंसेस. So let me write down first definition. A sequence an and runs from 1 to infinity is said to be monotonic increasing, is said to be a monotonic increasing sequence if an is less than or equal to an plus 1 for all n belonging to the set of natural numbers. Of course, इस condition का मतलब क्या है कि a1 is less than equal to a2 is less than equal to a3. मतलब ये sequence बढ़ती जा रही है, increasing. And this definition, a sequence an is said to be monotonic decreasing, अगर इसका उलट हो, said to be a monotonic decreasing sequence if इसका उल्टा क्या होगा, an is greater than equal to an plus 1 for all n belonging to the set of natural numbers. यानी in this case ऐसी situation, this would be our monotonic decreasing sequence. A sequence is said to be monotonic. A sequence is said to be monotonic if it is either monotonic increasing or monotonic decreasing. तो अगर कोई सीक्वेंस या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो उसको हम मोनोटोनिक कहते हैं. यानी मोनोटोनिक में दोनों आती है. एंड वी सीक्वेंस इज strictly monotonic increasing, the inequality is strict if the n is strictly less than an plus 1 for all n and strictly monotonic decreasing
if an is strictly bigger than an plus 1 for all n belonging to the absolute. So this was just the definition. Examples इसकी obviously तुम बना सकते हो straight forward. जैसे हमने लिया था, अच्छा जैसे हमने one, what is this? This is strictly monotonic. ये बढ़ रही है sequence है ना, increasing. So this is monotonic increasing. How about this 1, 1 by 2, 1 by 3? So ये क्या होगी? Monotonic decreasing. Because it decrease हो रही है. Actually, they are strictly monotonic increasing and strictly monotonic decreasing. 1, 1, 1, 1, very constant sequence है. So we can call it either monotonic increasing or monotonic decreasing. क्योंकि ये constant है, ये change नहीं हो रहा है. अच्छा, अब मैं तुमसे अगर पूछूं, how about this sequence? 1, should I take 1 or 2? 2, चलो 2 लेता हूँ मैं. 2 minus 1 by 2 raised to power n minus 1. ये सीक्वेंस क्या है? ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगी कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग? कोई बताएगा? एनीबॉडी अवेक? हाँ, हेलो, कोई है? एनी स्टूडेंट जो अभी तक सोया नहीं? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग है? यस सर. डिक्रीजिंग क्यों लग रहा है तुम्हें? सर वो गायब है स्क्रीन फिर से दिखाएं. हाँ, तो मैंने कहा था ये वाली सीक्वेंस, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि ये डिक्रीजिंग है? इसका जो सीक्वेंस की बनेगी वो डिक्रीज हो रही है. डिक्रीज हो रही है, श्योर? 1 minus देखो 2 को हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो छोटा हो रहा है, तो ये नंबर बड़ा होगा ना, क्योंकि जिस चीज को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो छोटा हो रहा है. ये क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. इट इज इंक्रीजिंग है ना. लेकिन बेस्ट तरीका क्या होगा इसको देखने का? पहले कुछ टर्म्स को हम देखें, है ना. मैंने बोला ना, जब भी कोई सीक्वेंस हो बेटर है कि तुम उसको चेक कर लो. तो अगर हम चेक करेंगे, a1 होगा 1, because this would be 2 minus 1, anything raised to 0 is 1, so it is 1. a2 क्या होगा? It would be 1 minus, नहीं, फिर होगा ये 2 minus 1 by 2, फिर होगा a3 क्या होगा? 2 minus 1 by 4, a4 क्या होगा? 2 minus 1 by 8. तो ये इंक्रीज हो रहा है एक्चुअली, है ना, क्योंकि इसको जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब एक्चुअली में नंबर बड़ा हो रहा है ना, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है. n को 2 देंगे तो ये आएगा, है ना, n को तो 1, 3 देंगे तो 2, 2 देंगे तो 3, 4 देंगे तो 3, एंड सो ऑन. सो जस्ट मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बेटर है कि तुम चेक करो, है ना. अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की सीक्वेंसेस के बारे में हम एक रिजल्ट करेंगे, वो जो नेक्स्ट पेज पे करते हैं. तो वो थ्योरम ये है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, कि a monotonic increasing sequence which is bounded above is convergent. यानी अगर कोई सीक्वेंस बढ़ रही है लेकिन ऊपर बाउंडेड है, then it must converge. और तुम्हें पता है एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो है इस तरह की होगी, so it is bounded below तो होगी ही. मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस is always bounded below by the first term. तो लेकिन आगे ये जो अपर बाउंड जो इसका है वो इसको हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर है so then हम कहते हैं it must converge. So let's prove this first, उसके बाद आगे बात करेंगे. Now suppose an
and runs from 1 to infinity is a monotonic increasing sequence that is bounded above. Bounded above. Then उसका मतलब ये है, then the set of its range, यानी अगर मैं इसको set लूं, set A equal to A1, A2, so on and so forth is bounded above. So therefore it must have a least upper bound. And hence by least upper bound property, it must have a supremum, least upper bound, LUP, say M. So M is equal to the supremum of this set A1, A2, ठीक है ना? Now we show that actually ये जो sequence है ये converge करेगी इसी supremum. Now we show that An converges to M as n approaches infinity. ठीक है? Okay, now since M is the least upper bound, M for any epsilon positive, M minus epsilon is not an upper bound. Of this set A. So therefore, upper bound न होने का मतलब ये है, therefore there must exist some n naught belonging to the set of natural numbers such that the n naught is bigger than m minus epsilon, right? है ना? अब चूंकि ये monotonic increasing है, तो situation ये होगी कि a n naught would be less than equal to a n naught plus 1 would be less than equal to a n naught plus 1 plus 2, and जितना ये इंडेक्स बढ़ेगा उतनी ये सीक्वेंस की टर्म्स भी इंक्रीज। अब अगर ये है बिगर देन m माइनस एप्सिलॉन जो कि यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सारी टर्म्स बिगर देन एप्सिलॉन। Now since an is monotonic increasing, therefore an would be bigger than m minus epsilon for all n bigger than equal to n. क्योंकि सारी टर्म्स बढ़ती जा रही हैं तो वो भी उससे बड़ी हों, but m is an upper bound because every least upper bound is an upper bound first. So therefore upper bound of a, therefore an would be less than equal to m, which would be strictly less than m plus epsilon for all n. Hence I can say an is less than m plus epsilon, bigger than m minus epsilon for all n bigger than equal to n naught. Therefore for any epsilon positive there exists this natural number n naught such that an minus m is less than epsilon for all n bigger than equal to n naught, which means nothing but कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करती है टू m। तो मैं दिखा दिया अगर कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो bounded above है, then it must converge and it must converge to its least upper bound. So
ओके, इसकी एक कॉरोलरी हम कर सकते हैं। एक कॉरोलरी से पहले एक रिजल्ट करेंगे, बाद में करेंगे। सिमिलरली एक और थ्योरम है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि a monotone increasing sequence, a monotonic increasing sequence which is not bounded above, which is not bounded above diverges to infinity. यानी ये oscillate नहीं होगी, it was just diverged, ये बहुत बड़ी होती जाएगी, it is not bounded above it, मतलब which is rather obvious. Again, to be very mathematically rigorous, we will prove it. So let me write it down like this. Let n runs from infinity, be a monotonic increasing sequence, monotonic increasing sequence that is not bounded above. So let m be any positive number. Then m cannot be an upper bound, cannot be, क्योंकि it's not bounded above, तो इसका कोई upper bound होगा नहीं. Upper bound of the sequence. Upper bound न होने का मतलब क्या है? So therefore there exists some n naught belonging to the set of natural numbers such that a n naught is bigger than m. And again, since a n is monotonic increasing, so I can see that a n is bigger than m for all n greater than or equal to n naught. तो आफ्टर स्टेज यानी n naught onwards मैं कह सकता हूँ ये जो सीक्वेंस है ये किसी भी m से बड़ी है, which implies that this an diverges to infinity. वर्ड्स में लिखता हूँ infinity. तो सिंपल सा ये था, क्या बोलते हैं, कंक्लूजन। अब मैं चाहूंगा इसका जो दूसरा हिस्सा है वो एक होम असाइनमेंट की तरह तुम करो, वो ये है कि ये थ्योरम ही है, लेकिन मैं चाहूंगा तुम पिछला जो हमने किया इसको यूज करो अब टू प्रूव दीज, मतलब विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं तुम्हें करना। वो ये है कि मोनोटोनिक, इसका उल्टा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस that is bounded below is convergent. अब तुम्हें यहाँ पे करना होगा वही कि अगर ये बाउंडेड बिलो है तो इसका एक इन्फिमम होगा, फिर तुम दिखाओगे ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी टू इट्स इन्फिमम। और दूसरा हिस्सा एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो अभी हमने किया उसी का मोनोटोनिक डिक्रीजिंग वर्जन, the monotonic decreasing sequence which is not bounded below. तो ये तुम खुद करोगे, मुश्किल नहीं है, अगर तुम पुराना प्रूफ देखोगे तो तुम सीधा उसको फॉलो करोगे। यहाँ क्या करना है, bounded below diverges to minus infinity. So you will do it yourself as a home assignment. तो इसके बाद हम इसको एक कॉरोलरी करना चाहेंगे, वो ये, आई होप ये आज ये खत्म होगा कि नहीं, हमारे पास 1.5 मिनट है। पहले मुझे बताओ तुम सभी सोए हो क्या? एनीबडी हो? नो सर। ओके, अब हमारे पास 1.5 मिनट रह गया है, तो अभी तक जो हमने किया उसमें से तुम्हें कोई दिक्कत या कुछ प्रॉब्लम, या सब कुछ इजी था? वैसे इजी था? घर पे पढ़ते हो ना? घर पे पढ़ते हो? ठीक है। ओके, तो मैं चाह रहा था आज हम कंटिन्यू करें, लेकिन
थोड़ा सा प्रॉब्लम। ओके चलो आज यहीं पे खत्म करते हैं। सो लेट मी सर एंड इट। हाँ रोल नंबर सर 36। जो हाँ सीक्वेंस है ना, मोनोटोनिक सीक्वेंस, हाँ जो मोनोटोनिक सीक्वेंस है, ये ऑसिलेट हाँ, करते हैं। वही बोला ना मैंने कि ये ऑसिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब क्यों? मैंने ये, हाँ ये तो कन्वर्ज भी कर, ये कन्वर्ज करते हैं ना, ये ऑसिलेट फिर क्यों नहीं करते हैं? ऑसिलेट का मतलब क्या होता है? तो अगर कन्वर्ज करेंगे तो ऑसिलेट कहाँ से करेंगे? ऑसिलेट का मतलब कन्वर्ज न करना। एक मतलब ऑसिलेटिंग सीक्वेंस की एग्जांपल कौन सी है हमारे पास जो हम करते हैं, जैसे 1 -1 1 -1 वन 1 माइनस वन, यस सर। और भी बहुत सारी। सो वो कन्वर्ज तो करेंगी ही नहीं ना। तो यस सर, मोनोटोनिक ठीक है। सीक्वेंस जो होगी या तो वो कन्वर्ज करेगी या इट वुड डाइवर्ज टू या इंफिनिटी डाइवर्ज। और माइनस इंफिनिटी, जो हमने अभी किया। अभी हमने दिखाया मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए मैंने